Welcome to a deep dive into LG Electronics IPO 2025, one of the biggest IPOs of the year. Most investors are searching for LG IPO's risk factors, and this is where the real story begins. Royalties, parent control, and the dependence on top 3 products. All of these could affect LG India's return here in India. In this video, we will answer top 5 questions that every investor is searching for. Who really profits when LG sells a fridge or AC in India? Can it stay ahead in a cutthroat market filled with cheaper rivals and shifting tech? What happens if its top 3 products stop performing? And if the company is so profitable, why are its margins quietly slipping? And finally, is the valuation justified? If you'd like a copy of this presentation, just drop your email ID in the comments below. I'll send it across. So this is the first chart of the kind of royalties and fees LG India pays to its parent. Now before that, let's understand the kind of control the parent has on the Indian operation. Currently it is 100% owned. Post IPO it will be 85%. So 15% sales the parent is offering under the offer for sale for investor. So no money is going to come into the company. Number 2 is the dependence. Now dependence is in terms of one is the component, second is the technology, 3 is the branding, and 4th is the raw material. Now let's look at the component part. Today 50% of the components for AC, for TV and for other electronics product come from the parent. So there is a very high dependence on parents for this key component. They have recently set up a factory here in India for compressor, for AC compressors. So we have to see how they reduce this dependence on the parent going forward. Now the important point is that the company pays significant royalties and license fees to the parent for the use of intellectual property and software. Now these payments are based on a percentage of revenue, meaning the cost can escalate as sales grow, affecting the margins. So now let's look at FY 2020. The royalties was 5.55%, and in terms of absolute number it was 930 crore. 2021 it is 6.02, it gone up. 2022 5.85, 5.29 and 5.53. So royalty as a percentage of revenue we have seen fluctuating or in the range of 5 to 6%. Now ये जो royalty है हर product की different royalty है. किसी product में ज़्यादा है 2%, 2.5, किसी में कम है. So this is based on different products. Now let's understand the risk part when it comes to royalties and fees to the parent. First is the permanent cost burden है. मुनाफा हो या ना हो royalty का भुगतान करना ही पड़ेगा. Second parent sets the term. Minority shareholders have limited control. So according to LG India's DRHP which I was reading, its royalty payment was about 2.3% of net sale for authorized products and 2.4% for LCD television and monitors. In his IPO filing, LG has also shown that royalty as a share of revenue has risen over the years. It was around 1.50 in 22 and gone up to 1.89 in FY 24. And the figure that we have shown in the chart is the royalties and the license fees together. That's why the numbers are 5.5 to 6%. The third point is the scope may expand. भविष्य में ये हो सकता है कि रॉयल्टी की दरें बड़ी तो मुनाफे पर काफी दबाव पड़ सकता है. And finally, there is no exit from payment. जब तक LG ब्रांड का उपयोग होगा, फीस जारी रहेगी. Now this is the second important chart on the LG's India market share in different products. So if you look at AC, it has a 31% market share. On the LED televisions, it has 64%. Market share, very high. A washing machine 33% and refrigerator 28.7 or 29%. Now these are also the segment where we are seeing very intense competition. It's not easy to maintain these kind of market share going forward.
So let's look at in the kind of risk that emanates from these products or the kind of competitive landscape which is there in the market for these products. So India's electronic and home appliances market is crowded with both Indian and international brand, and everyone is fighting hard on prices. Number one is the smaller towns. That's where the biggest challenge lies. छोटे शहरों और rural areas में लोग अक्सर सस्ते या अनब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं. ऐसे में एलजी जैसी बिग ब्रांड कंपनी के लिए इतने लो प्राइस मैच करना बहुत मुश्किल होता है. सो कॉम्पिटिटिवनेस बनाए रखने के लिए एलजी को ज़्यादा बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे आने वाले दिनों में, जिससे प्रॉफिट पर असर पड़ सकता है. न्यू प्रोडक्ट एरियाज एलजी इज स्टिल कैचिंग अप. नई कैटेगरी जैसे हेल्थ केयर गैजेट्स हैं, वाटर प्योरीफायर है, स्मार्ट होम डिवाइसेस हैं, में एलजी अभी लीडर नहीं है. कंपनी खुद मानती है कि वो इन मार्केट में अभी एक्सप्लोर करना शुरू कर रही है, यानी कंपनी काफी पीछे है कई नए प्रोडक्ट्स. एंड थर्ड एंड फाइनल इज द ऑनलाइन शिफ्ट. आजकल ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अप्लायंसेज ऑनलाइन खरीद रहे हैं. एलजी रिटेल स्टोर में स्ट्रांग है, लेकिन अगर ई कॉमर्स या डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल्स में तेजी से ग्रो नहीं किया तो उसे स्ट्रगल करना पड़ सकता है. सो दिस इज द एलजी स्टोरी in the last 15-20 years. So what matters for investor is the next 5-10 years, जिसमें काफ़ी कंपटीशन बढ़ रहा है and इतने इनोवेशन हो रहे हैं with AI and other thing. क्या LG यही मार्केट शेयर मेंटेन कर पाएगा? सो हमको पास नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि फ्यूचर किस तरह से इवॉल्व हो रहा है, और जो पॉइंट मैंने अभी आपको 3-4 पॉइंट्स बताए हैं उसमें एलजी आगे जाके कैसा करेगा, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट. नाउ लेट्स लुक एट द रेवेन्यू शेयर बाय प्रोडक्ट सेगमेंट. यहाँ से भी हमें कुछ जानकारी मिलेगी कंपनी के बारे में. सो इफ यू लुक एट द टॉप 3 प्रोडक्ट, एसी, रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन, दे कंट्रोल मोर देन 70% ऑफ द रेवेन्यू. तो ये आपको बताता है कि कैसे सारा रेवेन्यू कंसंट्रेटेड है 3 प्रोडक्ट्स में ही, और जिसमें ही हम लोग काफ़ी कंपटीशन देख रहे हैं. एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, काफ़ी इंटेंस कंपटीशन यहीं आ रहा है. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द रेवेन्यू शेयर. टेलीविजन में 13%, मिसलेनियस जिसमें अप्लायंसेज आते हैं जहां अभी वो ग्रो कर रहा है 11%, एंड 3 वी हैव सीन एसी इज द हाईएस्ट, देन कम्स रेफ्रिजरेटर, एंड देन कम्स 16.53 इज द वॉशिंग मशीन. सो लेट्स अंडरस्टैंड द रिस्क in having a very concentrated portfolio. Now AC जहाँ सबसे ज़्यादा मार्केट से 33% है, यहाँ पर आता है आपका सीजनलिटी रिस्क. बट अगर हम देखें तो LG has 33% मार्केट शेयर इन AC. सो अगर ऑफ सीजन है तो वो कौन से प्रोडक्ट होंगे जो कंपनसेट करेंगे टू सच ए लार्ज मार्केट रेवेन्यू शेयर विच दे हैव इन AC. सो ये काफ़ी हद तक समर वेदर पर डिपेंड करता है. अगर सीजन ठंडा है तो हो सकता है कि एसी भी काफ़ी इम्पैक्ट हो जाए सेल्स. देयर इज अ लिमिटेड क्वेश्चन इन डाउनटर्न्स. अगर कोई बड़ी कैटेगरी अंडर परफॉर्म करती है प्राइस कंपटीशन, टेक डिस्ट्रप्शन या डिमांड स्लम्प की वजह से, तो उसका सीधा असर ओवरऑल रेवेन्यू में पड़ने वाला है एलजी के. थर्ड इज द इनोवेशन एंड डिस्ट्रप्शन रिस्क. नई टेक्नोलॉजी जैसे एआई पावर्ड या आईओटी इनेबल्ड अप्लायंसेज आ रहे हैं और इको फ्रेंडली ऑप्शन मौजूदा प्रोडक्ट लाइन्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं. अगर एलजी तेजी से एडप्ट नहीं हुआ तो मार्केट शेयर खो सकता है. एंड फाइनली ग्रोथ सैचुरेशन. कुछ मैच्योर सेगमेंट जैसे वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर में ग्रोथ पोटेंशियल फ्लैटन हो सकता है. उसमें काफ़ी जापानीज, चाइनीज, ऑल तरह के प्लेयर आ चुके हैं. अगर एलजी इमर्जिंग कैटेगरी जैसे हेल्थ इलेक्ट्रॉनिक्स है, स्मॉल होम अप्लायंसेज है, में एक्सपेंड नहीं करता है बड़े तरीके से, तो बिजनेस स्टैग्नेंट हो सकता है आने वाले दिनों. नाउ लेट्स लुक एट द ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इन द लास्ट 5 years. From 21, if you see 14,000 crore revenue to 16,000, 18, 20, 21, slightly यहाँ पर जरा stagnate हुआ है. Otherwise, company has a very robust revenue growth in the last 5 years. EBITDA देखें तो 1300, 1400, 17, 18 यहाँ पर जरा सी stagnation दिख रही है last 2 years में. Net profit 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1400 करोड़, 15, 16. मार्जिन्स देखें तो वो भी 8 to 9 के उसमें ही चल रहे हैं एबिटा मार्जिन. नाउ जरा सी लास्ट 2 साल में दिख रहा है, जरा सी स्टेग्नेशन दिख रही है, लेकिन हो सकता है कि दे विल
overcome this in the years to come. बट फाइनेंशियल्स कह सकते हैं कि एलजी के ठीक ठाक हैं. और ये लास्ट 2 साल का जरा सी स्टैग्नेशन दिख रही है. हो सकता है कि इज बिकॉज ऑफ हायर ऑपरेशनल कॉस्ट, इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स हैं, रॉयल्टीज़ हैं, कम्पिटिटिव प्राइसिंग प्रेशर भी हो सकता है बिकॉज काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है. एंड पॉसिबली रॉयल्टी और लाइसेंस फीस जो पेरेंट को पे करते हैं वो भी यहाँ काफ़ी मैटर करता है. नाउ लेट्स लुक एट द वैल्यूएशन. जो प्राइस बैंक डिसाइड किया है वो है 1080 से 1140 का. सो 1080 1140. सो इफ यू लुक एट LG's price to earning, based on this price, it comes out to be 33-35 times. Havells का 64 है, काफ़ी ज़्यादा है. Voltas 52 है, Whirlpool 43 and Blue Star 65. In terms of market cap also, it will be next to Havells, with 73 or to 77,000 crore, plus, market cap. But let's understand, if you look at the numbers, it looks cheaper than, Havells, Voltas, Whirlpool and Blue Star. But let's analyze this, the PE in much more detail. See, LG is a much diversified, company. Whereas if you look at, Voltas, which is into AC heavily, Blue Star is also into AC and cooling solutions and all that. So in that sense, the peer group is very different. They are maybe in 1 or 2 products, where LG is into multiple products. So because of a product focus portfolio, they may be getting a higher valuation, than LG. Now, if you compare, global parent, LG's global parent, LG globally gets a PE of 12. So IPO looks very expensive at 33-35. And दूसरा एक बड़ा important factor है Hyundai Motors. And recently there was a lot of talk in the market कि कैसे promoters are selling out or promoters are offloading their stake. And in this company also the same is happening, where 15% offer for sale is from the promoter to the public. So Hyundai में भी वो एक इशू था कि promoter बेच रहे हैं और शेयर जरा सी डिप्रेस था initially, but in the last 1 year, I mean the IPO came last October, Hyundai Motor has given a return of 34%. But इसमें एक बहुत बड़ा important factor है जो I thought I must tell you. See, promoter often sell when they believe the company has reached a point of maturity, strong sales, brand domination, steady profits, but also when future growth may face headwinds. So जो अभी हो रहा है, अगर हम देखें the kind of disruption that is happening, and even on the trade side, a lot of things, a lot of deals are happening, country to country, FTAs are happening. So by listing at rich valuation today, the promoter may be signaling that the current cycle of high margins and market leadership won't last forever. So ये भी हो सकता है कि LG अपनी पीक पे पहुंच चुका है और यहाँ के बाद डिक्लाइन ही होने वाला है. So I want investors, not to look at valuation in the sense that it's cheaper than Havells, Voltas, so let's buy it. So आपको ये factors, सारे factors consider करने पड़ेंगे, before applying into LG India's IPO. So as I keep saying in every video, this video is only for educational purposes, and if you wish to apply, do consult your financial advisor.